Hello, dear students. Welcome back to our today's class. Okay, all of you have successfully submitted your unit test. I hope that. Okay, and all of you have got a very good marks in your second unit test. Yes. So now from today onwards, let's come back to your semester syllabus. Okay, your semester is also very important. Okay, and it is on the way, so you have to study. Okay, very well. So let's come back to your chapter number 11, reflection of light. Okay, so of this chapter, from this chapter we have studied 2 3 some 5 4 topics. Okay, so first, in the very first video we have learned about some basics related to reflection of light. Okay, after that we have seen the two types of mirrors, that is what, plane mirror and spherical mirror. Okay, plane mirror, which means what, a surface. A mirror which having which kind of surface, it has a plane surface. Okay, you all are aware about these two types of mirrors, that is plane mirrors, spherical mirrors. Okay, in your day to day life you already have observed such kind of mirrors. Okay. Okay, now in the last class we have learned about spherical mirror. Spherical mirror, which means what, a mirror which has a spherical or curved surface, so it is called as what, spherical mirror. Okay, here you can see the spherical mirror, and we have two types of spherical mirror, that is, first one is a concave mirror and second one is what, it is called as convex mirror. Okay, so what is concave mirror? Here you can see, if the inner surface of spherical mirror is a reflecting surface, which means what, a shiny surface through which we can see our image. Okay, yes, so here you can see, so it is called as which mirror, this is a concave mirror. Now what about convex mirror? Here you can see a convex mirror if the outer surface of the spherical mirror is a reflecting surface. ओके, सो जहाँ से जिसका आउटर सरफेस जो है वो शाइनी है, जहाँ से हम देख सकते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, अ कॉन्वेक्स मिरर. हियर इन कॉन्केव मिरर यू कैन सी your image is magnified, which means what, you can see a very big image, your image is very big. Here you can see your face image, okay, which is big, but here you can see a little very small images, and we can see यहाँ से ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वहाँ से हम दूर का भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हमारे जो गाड़ी का मिरर होता है, ओके, हमारी एक्टिवा का मिरर होता है, और सम काइंड ऑफ कार मिरर्स, सो दे आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, देन वी हैव सीन some terms related to spherical mirrors in our last class. So here you can see this is the pole of mirror. Okay, so here this is called as pole of mirror. ठीक है, now this is called as what, C, it is called as center of curvature. ठीक है, yes, now this axis is called as what, principal axis. Here you can see this parallel line, it is called as principal axis. Okay, here you can see radius of curvature, this is called as radius of curvature. F is called as what, focus. Okay, so these are some terms which are related to what, spherical mirror. Okay, now today we are going to start a very interesting topic, that is how to draw the reflected rays. Okay, drawing the reflected rays. ठीक है, so for that here you can see one image. So this is one kind of image where you can see Mn is a spherical mirror. Mn कहाँ पर है, यहाँ पर. Here you can see Mn, this is called as what, it is called as spherical mirror, and a ray AQ is incident on it. Where is AQ ray? Here you can see AQ ray which is incident. Okay, जो यहाँ से यहाँ तक ये जो मिरर है वहाँ पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है. ओके, सो AQ इज कॉल्ड एज व्हाट, इंसिडेंट रे. CQ इज अ रेडियस. हियर यू कैन सी CQ. ओके, इट इज कॉल्ड एज रेडियस, एंड देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट Q. ओके, ये कहाँ पे परपेंडिकुलर है, Q पे. ठीक है, C जो है वो Q पे परपेंडिकुलर है. सो दस एंगल AQC
इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट. कहाँ पर है एंगल AQC. ये जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है. येस, बिकॉज AQ इज़ अ इंसिडेंट रे एंड CQ, यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ अ रेडियस. ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे फॉर्म वन एंगल AQC. According to the laws of reflection, angle of incident and angle of reflection are in the same measure. ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट AQC. तो अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? CQB. ओके, सो नाउ यू कैन सी दस वाइल ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे QB. यहाँ पे देखो AQ इंसिडेंट रे है, तो QB कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड रे. ओके, yes, and angle CQB is equal to angle AQC. yes, because ये जो है इंसिडेंट एंगल है और ये जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है. सो बोथ आर व्हाट? इक्वल टू ईच अदर. yes, very easy, very simple. okay, so there are some rules which are there for drawing the ray diagrams. ray diagrams मतलब क्या होता है? Through that diagram, through the rules, we can draw innumerous types of ray diagrams. okay, so for that what we need to remember? We need to remember these rules. okay, so let's see the rules one by one. Very easy rules. So first rule is, if an incident ray is parallel to the principal axis, here you can see this blue color line, this is called as incident ray. why it is called as incident ray? because ये रे जो है वो ये मिरर को क्या है? इंसिडेंट है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो इंसिडेंट हो रही है, सो इट इज़ इंसिडेंट रे. सो इफ़ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो ब्लैक वाली लाइन है इट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. ये इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या है? पैरेलल है. ओके, सो देन व्हाट हैपेंड? देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. फिर ये पिंक कलर की जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? ये यू कैन सी प्रिंसिपल फोकस से. F इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल फोकस. तो ये रूल नंबर 1 है, दैट इज इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से. ठीक है. ओके, नाउ रूल नंबर 2, if the incident ray passes through the principal focus of the mirror, here you can see, यहाँ पे देखो ये पिंक वाली जो लाइन है नीचे वाली, here you can see, first you can see a blue वाली लाइन. यहाँ पे देखो ये जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से. ओके, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो सेकेंड रूल है वो फर्स्ट रूल का उल्टा है. यहाँ पे क्या हो रहा था? इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल हो रही थी, देन रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही थी? रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. बट यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे ही अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को. ठीक है. वेरी लिटिल माइन्यूट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. अगर ये छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान में रखा तो पूरा रूल जो है वो आपका अच्छे से ध्यान में आ जाएगा. ठीक है. सो वी आर डन विथ 2 रूल्स. नाउ द थर्ड रूल इज, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर यू कैन सी इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक. देन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फिर से यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी. ठीक है. कब? जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ से पीछे की तरफ मूव हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज रूल नंबर 3. ओके, नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो व्हाट इज दैट एक्टिविटी? लेट्स सी. ओके, सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड कैंडल और ग्लास लैम्प, देन वी रिक्वायर्ड 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, then large cardboard sheet, white paper we need concave mirror, meter ruler and wooden block. Okay, so what we have to do in this experiment? Let's see. Take the cardboard box large enough to hold the candle or lamp. Okay, तो इतना बड़ा कार्डबोर्ड
बॉक्स लेना है और यहाँ से सो इट इज़ एबल टू होल्ड वॉट कैंडल और लैम्प. Cut off one side and place the candle inside. So here you can see how to cut like this. और क्या डालना है इसमें, यहाँ पे क्या we have to put a candle. Okay. Now cut out an arrow shaped slit from one side so that we get an arrow shaped light source. Okay. Yes, यहाँ से arrow shape जो है वो मार्क करना है. Now make the screen of size 20 cm into 30 cm by stitching a white paper on the cardboard sheet and set it up vertically with the help of wooden block. So basically हमें ऐसे arrangement करना है. Here you can see this is a concave mirror. Okay, now fix the mirror vertically on the other cardboard box by making a slit on its top surface. So यहाँ पे another cardboard box है जिसमें कॉन्केव मिरर को इसके अंदर पुट किया है. हियर यू कैन सी द कॉन्केव मिरर इज देयर. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, प्लेस द स्क्रीन नियर द विंडो एंड प्लेस द मिरर in front of it such that the image of the sun or some far away object forms clearly on the screen. Okay, so this type of practical you have in your 10th standard which is very interesting. Okay, तो हमें क्या करना है, ये जो है पूरा कहाँ पे रखना है, नियर द विंडो, सो दैट वी विल गेट रिफ्लेक्शन वेरी क्लियरली. ओके, नाउ वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द मिरर इन दिस सिचुएशन. नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द मिरर, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेजर with the help of meter scale. It is the focal length of the mirror. So उसको क्या बोलते हैं, it is called as focal length of the mirror. Obtain the clear image of the source on the screen by moving the screen along with the meter scale and perpendicular to it. So we have to move this kind of screen so that we will get a perfectly clear image. Okay. The image will be inverted and larger than the source as the image is obtained on the screen is a real image. तो हमें इमेज कैसे दिखाई देगा, इन्वर्टेड विच मीन्स उल्टा. ओके, अपोजिट ऑफ द नॉर्मल इमेज. जो हमारा इमेज है वहाँ से हमको अपोजिट इमेज देखने को मिलेगा. एंड दिस इमेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज. रियल इमेज मतलब क्या होता है, द इमेज विच वी ऑब्टेन ऑन द मिरर. ओके, यस, और वो कैसा होगा, लार्जर भी होगा दैन द सोर्स. ठीक है, सो दिस इज योर एक्टिविटी. सो हियर यू कैन सी वन डायग्राम. सो इन द फॉलोइंग फिगर ए एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस. हियर यू कैन सी ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पे प्लेस्ड किया है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर एम एन. यहाँ पे एम एन इज अ कॉन्केव मिरर. One object AB is placed between F and C. Okay, the incident ray AQ starting from A and going through the focus. Incident ray कहाँ पर है, AQ, A and Q. Yes, तो ये कहाँ से जा रही है, here you can see starting from A and going through the focus. और वो कहाँ से जा रही है, here you can see focus से जा रही है. Yes, becomes parallel to the principal axis and returns along QR. QR से वो यहाँ से रिटर्न हो रही है which is parallel to what, principal axis. ओके, तो ये ब्लैक वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल. ओके, नाउ द इंसिडेंट रे AS पैरेलल टू द एक्सिस. AS कहाँ पर है, या यू कैन सी AS, yes, which is parallel to the axis. This is the axis. After reflection passes through the focus and return along ST. Here you can see it passes through the focus. AS जो है वो यहाँ से पास होके, फोकस से पास होके क्या बना रही है, ST. ओके, it cuts the reflected ray QR. तो ये जो रे है वो किसको कट कर रही है, Q एंड R को. ये ST जो है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे. एंड हियर यू कैन सी दे मीट एट वन पॉइंट. Thus the image of A is formed at A dash. तो जो ये दो रे है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. Here you can see they meet at one point, so it is
marked as a dash. Okay, यहाँ को इसको क्या लिखेंगे, a dash. Now the point B is situated on the principal axis. Here you can see point B, वो कहाँ पर है, principal axis पे. So its image will also be on the axis and will be directly above A dash. तो ये B का image है वो कहाँ पे form हो रहा है, B dash पे. So here you can see this image is formed over here. Yes, the images of point between A dash and B dash will be formed between points A dash and B dash. तो यहाँ पे you will see one image. So the image of the object AB is what, A dash B dash. तो ये AB का image कहाँ पे form हो रहा है, यहाँ पर. And this is called as A dash B dash. Okay. Yes. So from this we see that when the object is placed between the focus यहाँ पे and center of curvature, the image is formed beyond the center of curvature. ओके तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. दिस इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे देखो एरो कहाँ पर है, यहाँ पर. बट यहाँ पे एरो कहाँ पर है, नीचे वाले साइड पे, दैट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स दिस इज़ इन्वर्टेड इमेज. और ये इमेज दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ स्मॉलर दैन द इमेज. इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो लार्जर है. एज द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली क्रॉसेस ईच अदर, द इमेज इज रियल इमेज एंड कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. ओके, सो हियर यू कैन सी द फॉलोइंग इमेज बी. यहाँ पे देखो फॉलोइंग इमेज बी. एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल. ए बी कहाँ पर है, प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस. ये पोल है और ये फोकस के बीच में ये ए बी को रखा है. इफ़ द इंसिडेंट रे ए क्यू इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ए क्यू कहाँ पर है, हियर यू कैन सी दिस स्मॉल ब्लू वाली लाइन. सो इट इज़ कॉल्ड एज ए क्यू विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. येस, यहाँ पे पैरेलल है. एंड द इंसिडेंट रे ए एस इज द डायरेक्शन जॉइनिंग ए विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. हियर यू कैन सी ए एस. ओके, ये कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है. ए एस यहाँ पर है और हियर यू कैन सी सी. ओके, सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर. द फिगर शोज हाउ दिस रे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इमेज ए डैश बी डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हियर यू कैन सी यहाँ पर इमेज जो है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये साइड में. ये किसी भी एंगल पे दोनों रेज जो है वो नहीं मिल रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे सो दैट दे विल मीट एट अ पॉइंट. ओके, और जहाँ पे वो मीट हो जाएंगे वहाँ पे हमको मार्क करना है इमेज. ओके, सो व्हाट इमेज वी विल गेट ओवर हियर, दैट इज़ ए डैश बी डैश. ठीक है, बट यहाँ पे हम देखोगे तो द इमेज इज़ इरेक्ट. इरेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे एरो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज इरेक्ट. एंड वर्चुअल, वर्चुअल मतलब क्या, हियर द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर. यहाँ पे मिरर है, मिरर के पीछे जो है वो इमेज फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे किधर भी नहीं इमेज फॉर्म हो रहा है, वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज. ठीक है. Okay, now there are some positions of image, okay, position of object, and we have to draw the images. First position क्या है, here you can see a first position between the pole and the focus. तो image कहाँ पर है, this candle is called as object. okay, ये object है. okay, और ये किसके बीच में है, pole and focus. ठीक है. so here you can see एक line जो है वो यहाँ से ये पोल को पैरेलल हो रही है, यहाँ से जाके फिर वो कहाँ से आ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, बिकॉज दिस इज़ आवर रूल. तो वन लाइन विल गो ओवर हियर, इट इज़ इंसिडेंट ओवर हियर एंड इट कम बैक फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एफ. ओके, और दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पे देखो, छोटी वाली लाइन, हियर यू कैन सी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट लाइन, वो जो है वो हमारा थर्ड रूल फॉलो करती है. इट विल come back to the same path again through the center of curvature, and these two ray will meet at a certain point where it forms one image. Here this is
कॉल्ड एज वन इमेज. ओके, सो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड द मिरर. येस. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इरेक्ट एंड वर्चुअल. इरेक्ट विच मीन्स व्हाट? सेम डायरेक्शन में है. यहाँ पे देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज़ कॉल्ड एज इरेक्ट. एंड वर्चुअल मतलब क्या? इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? मिरर के पीछे. सो इट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. एंड द साइज ऑफ इमेज इज मैग्नीफाइड. हियर यू कैन सी इमेज इज शॉर्ट, और यहाँ पे थोड़ा बिग इमेज वी विल गेट. सो इट इज़ कॉल्ड एज मैग्नीफाइड इमेज. नाउ यहाँ पे सम सेकेंड एंड थर्ड इमेज आई हैव ड्रॉन ऑलरेडी. सो सेकेंड पे क्या है? इमेज कहाँ पर है? फोकस पे. तो एक रे यहाँ से जाके प्रिंसिपल फोकस से फॉलो करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड वन रे जो है वो यहाँ से जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर के का पाथ जो है इट विल फॉलो दैट. बट यहाँ पे जो है इमेज जो है वो हमको इधर किधर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस टू रेज नेवर मीट ईच अदर. ओके, वो इन्फिनिटी पे जाके बहुत दूर डिस्टेंस फॉलो करके एक दूसरे को मीट करेगी, एंड दैट इमेज इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड इमेज, और वो रियल इमेज होगा. और इन्फिनिटी पे है इसलिए वो वेरी लार्ज इमेज होगा. ठीक है. नाउ द थर्ड इज बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिटवीन द फोकस एफ यहाँ पर है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, एंड हियर यू कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, येस. So one ray will parallel to the principal axis and go through the principal focus, and second जो है वो नीचे से principal axis को parallel होके वो focus की तरफ आएगी. And here you can see this image will meet at a certain point where you can see the image gets formed. These two rays meet at this point where image get formed, and it is what? इन्वर्टेड एंड रियल. इन्वर्टेड मतलब क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन. और वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. और यहाँ पर यू कैन सी अ वेरी बिग इमेज वी विल गेट. ठीक है. नाउ दिस 4, 5 एंड 6 दिस यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ. ये 4 का मैं एक बार दिखाती हूँ. एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ पर है? यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो वन रे इज इंसिडेंट ऑन द एक्सिस और इट विल गो फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड वाली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और वो फोकस से जाएगी. सो इट विल मीट, हियर यू कैन सी दिस विल मीट एट दिस पॉइंट जहाँ पे इमेज जो है फॉर्म हो रहा है. येस, एंड इट इज़ कॉल्ड एज विच इमेज? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज. ठीक है. नाउ दिस इज द 5th सिचुएशन, एंड हियर यू कैन सी दिस इज द 6th सिचुएशन. ठीक है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज सन. Okay, so go through this entire video 2-3 times. Watch the video carefully. We have seen how the concave, how the 3 rules of your to draw a ray diagrams. ठीक है. Then we have seen the different position of the object and how to draw the position of image. Okay, go through the entire video and see the textbook. Thank you.